हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं सब लोग? मेरा नाम है अरविंद और हम हैं हैदराबाद बॉयज़, वेयर वी टॉक ऑल थिंग्स क्रिकेट। और हमारे साथ हैं सौरभ। Hello everyone, Arvind. भाई, ऑलराइट, तो शुरू करते हैं WTC फाइनल का रिव्यू। बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कहूँगा, बट द वे इट अनफोल्डेड हैज़ बीन अ शॉकर फॉर इंडिया, इंडियन फैंस। दर्शकों को बता दें कि आज इंडिया ने, वेल, कल इंडिया ने IPL, सॉरी, WTC के फाइनल हार चुका है। और क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हुआ है। थोड़ा मैं स्कोर बोर्ड दिखा देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया हैज won it by 209 रन्स। सो सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 274 8 डिक्लेयर किया था, ये तो मैं पता था आफ्टर डे 2 डे 3 में। और डे 4 में ये सब हुआ था। एंड देन इंडिया स्टार्टेड वेल, Rohit Sharma, and then everyone got starts. And Kohli was there. जल्दी से उन्होंने रन रेट करा था, बट एट द टाइम कोहली एंड रहाणे, कोहली केम आउट, आई थिंक इट वाज 91 for 3 या 92 for 3 Yeah, पे ये सारा something हो on गया that. था। Yeah, Then you had a partnership between Kohli and Rahane, and they ended the day at around 174 for 3 या 164 for 3। तो yeah, लगा था कि day 5 pitch is still good, for batting. It's not crazy turning or anything. India could do well. At least India could put up a fight. Technically, modern standards में 260 270 runs banana was not gonna be a unachievable, not a unachievable, impossible target. And you had players like Kohli and Rahane. Come in morning, first 30 minutes, the game's over. Kohli gets out within 2 3 balls. Jadeja gets out. And then you had basically Rahane and Shrikar Bharat did a थोड़ा पार्टनरशिप करा था। 210 उसके बाद I think Rahane got out, and then I think, yeah, from there, so basically it's end of story, and India, I think, collapsed the last 7 wickets in, I think, 54 runs or something, 55 for last 7 wickets. And I think ये सेशन लंच तक ही हो गया था, इफ आई रिमेम्बर, इफ आई बिलीव राइट। yeah. एंड ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री से, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म से ये गेम जीता, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी जीता। एंड देन दे हैव बिकम द सेकंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। फर्स्ट वन वाज न्यूजीलैंड, एंड इंडिया इज अनदर फेलियर। सेकंड टाइम दे हैव गॉट टू द फाइनल और फिर से हार गए। और एक और आईसीसी ट्रॉफी हार मिली है इंडिया को। तो अब 12 साल होने को आ रहे हैं, 11 साल होने को आ रहे हैं, एक्चुअली 12 साल हो जाएंगे फॉर इंडिया Hmm. टू हैव वन एन आईसीसी टूर्नामेंट और एन आईसीसी ट्रॉफी। Yeah, so that is what it is. Yeah, that's a wrap for India there. Australia will go and start their summer ashes. I think they've got a perfect mechanism there. So Saurav, क्या हुआ day 5? Day five was a meek surrender. Quite a shocker actually. Australia were the favorites. I would say Australia had the advantage. हालांकि in the modern times, as you rightly said, अगर आप देख रहे हैं इंग्लैंड या फिर recently थोड़े भी बहुत चेजेस जो हुए हैं, especially by England, I made that point. They've been able to score 250, 300 runs on a given day. और जैसा पिच खेल रही थी, actually day 4 kind of became when India was batting, and it could also be due to the fact Kohli was batting very very well, and that's what great batsmen can actually do sometimes. जैसे लेकिन कोहली खेल रहे थे, लग रहा था कि day 4 was the best in terms of batting. और as far as the Indian batting, the way they batted, I know एक टाइम पे 92 for 3 आ गया था, लेकिन अगर आप देखें गिल जैसे बैट कर रहे थे, थोड़ा सा अनलकी रहे गिल। हालांकि लॉ के हिसाब से ही वाज आउट, जस्ट टू मेक दैट पॉइंट अप फ्रंट। रोहित अच्छी बैटिंग कर रहे थे। कोहली, आई थिंक पुजारा हैड अ वेरी डिसअपॉइंटिंग टेस्ट मैच, कंसिडरिंग ही वाज हियर फॉर यहाँ पे
आई थिंक एक महीने से थे, आप सरी के साथ Yeah, he was खेल रहे थे। playing for, yeah, he was playing for या Sussex, I तो think. उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट रहा। लेकिन जैसे विराट कोहली और रहाणे खेल रहे थे, आई थिंक इंडियन फैंस के होप्स काफी थे। एंड आई वुड नॉट फॉल देम। 280 रन मुझे भी लगा कि अगर, आई थिंक व्हाट वाज द की वाज कि फर्स्ट सेशन में क्या होगा। और आपने जैसे बोला कि आधे घंटे में ही मैच खत्म हो गया, और आधे घंटे में मैच खत्म हो गया। आई मीन एज सुन एज कोहली गॉट आउट, जडेजा से भी थोड़े होप्स थे बोल सकते हैं, क्योंकि जडेजा ठाकुर, लेकिन इट वाज काइंड ऑफ होपिंग अगेंस्ट द होप। आई थिंक कोहली वाज द की। कोहली एंड रहाणे की पार्टनरशिप वाज द की। आई थिंक अगर रहाणे भी आउट हो जाते जल्दी, आई वुडंट रियली हैव बेटेड ऑन इंडिया एक्चुअली, इवन दो कोहली वाज देयर। लेकिन जैसे ही कोहली आउट हुए, और आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट क्या था कोहली का, इफ आई कैन जस्ट गो थ्रू द मोड ऑफ डिसमिसल, ये एक सेम प्रॉब्लम है कोहली की। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड हिज टेस्टिंग्स और यू कैन रिकलेक्ट हिज टेस्टिंग्स। ये एक फोर्थ फिफ्थ स्टंप Correct. पे आउट होना। लोग बोलेंगे कि सेटअप है, फर्स्ट टू बॉल्स जो बॉलर ने डाली थी इट वाज अ सेटअप, लेकिन बैट्समैन ऑफ हिज कैलिबर एंड इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, आई थिंक दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। आई Yeah, थिंक and he was set in. He was in the crease now. या He was ही set वाज इन द in. क्रीज एंड और आई थिंक उस ओवर से पहले ही, आई थिंक एक भी बॉल शायद बीट नहीं हुई थी। वो जो ओवर था उसकी पहली बॉल बीट हुए, सेकंड बॉल ही लेफ्ट इट, एंड थर्ड बॉल ही जस्ट ही उन्होंने अच्छी लेंथ और लाइन पे Made a डाली mistake. बॉलर ने, एंड ही मेड अ मिस्टेक। आई मीन ही वाज कॉट, ही वाज कॉट, आई Yeah. मीन ट्रैप था और ही वाज कॉट। तो जैसे ही कोहली आउट हुए, फिर उसी ओवर में जडेजा आउट हुए, और उसी ओवर में एक्चुअली श्रीकर भरत भी आउट होने वाले थे Almost. Yeah, I know. The last ball at ऑलमोस्ट। four वो या चला गया था, लास्ट बॉल, but एंड दैट वाज मैच वाज ओवर। उसके बाद that तो one over इंडिया की, changed. I think that's it. दैट्स But इट, that one over of दैट्स bowling and then game was over. And दैट्स इट, दैट्स इट। उसके बाद आई it थिंक was wrap आई up. थिंक हाँ, मतलब एक चीज था कि आई थिंक व्हाट वुड बी डिसअपॉइंटिंग इज द वे द मैच एंडेड, Yeah. कि आपके 7 बैट्समैन एक ही सेशन में आउट हो गए। आई थिंक दैट वाज, It's a very contrasting to, Gaba बोलते थे in 2019 series, Washington Sundar, Rishabh Pant, the kind of stuck in they did, Rahane and others when Kohli या wasn't या there. या They या took the game. It's not about defeat, it's the way you gave the game away. राइट। और The ये अगर आप scale, the देखेंगे, sessions, या या बहुत ज्यादा मतलब you could have played out till teen, थोड़ा मतलब you could have stuck in, right, the mechanisms for you. And I think it points out some flaws in the whole Indian system. But I thought I'd share quickly to you an interesting aspect जो um, रोहित शर्मा ने कहा, which I thought ओ, was absolutely आई थिंक embarrassing and या pathetic. आई थिंक उनका And जो I thought पोस्ट, I call it out here. मैंने मतलब I'm not going to go into the full article, but इनके दो स्टेटमेंट आए। एक था कि पहले द ग्रीन कैच ऑफ शुभमन गिल, and he's giving this statement like third umpire should have seen more replies. And then if you look at the quotes in this, is like more camera angles should be shown. There were only one or two camera angles. We got more angles in IPL. We got 10 different angles in IPL. I don't know why in a world event like this, there's no ultra motion. That is what I'm a little disappointed with. So I thought this was a first statement. And then Rohit Sharma bizarrely says, um, why should we only have one final? Why can't we do best of 3 series? And ये बिजार, मार्च में क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये इंग्लैंड में ही क्यों खेलना है? कहीं और क्यों नहीं खेल सकते हैं? दिस इज I रिडिकुलस। am like, this is absolutely ridiculous. आप हार गए हो, आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि ये एक ही टूर्नामेंट हो रहा है। And I felt when I was reading the article, Pat Cummins gave a perfect reply to Rohit Sharma, and this is what he said. I think it's fine. No comms. Ideally, would have 50 match series, but the Olympics have come down to one race to win one gold medal. ओ, Your NFL, your AFL, Australian Football League, and Super Bowl in US all have one final, and that's sport. And so I think that's basically a charta on जैब, Rohit's द जैब, statement. कैसे जैब है?
What do you have to say about this Rohit Sharma's comments? आई थिंक उनके दो तीन स्टेटमेंट्स, आई मीन दीज आर द टू बिगर वंस, आई थिंक काफी डाइसेक्ट किया जा सकता है. टॉक्स अबाउट the mentality or the framework the entire Indian cricket team is apart. I mean, it can also be a statement which is purely personal, लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग रिमार्क है. आई मीन यूजुअली मैंने रोहित शर्मा के पोस्ट मैच स्टेटमेंट्स देखे हैं या फिर उनका इंटरव्यूज देखे हैं. ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि he has never made that weakish sort of remark. He's always, shown that, signs of a true leader, if I may say. Although you can always question his captaincy and the kind of decisions that he makes on the field, off the field. लेकिन ये स्टेटमेंट काफी सरप्राइजिंग था. आई थिंक आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि अभी फ्रेंच ओपन हुआ था, जोकोविच वॉन, तो क्या बेस्ट ऑफ थ्री फाइनल खेले? हालांकि वहां पे बेस्ट ऑफ फाइव सेट होता है, लेकिन क्या बोलना कि क्या मतलब क्या, व्हाट आर You यू played ट्राइंग टू 5 days. कन्वे? What are you trying to tell? You played 5 days and you couldn't win. 5 days. And And if you look actually, at the sessions, I think Australia won 8 of the 10. 4 दिन 12 सेशन, थिंक 13 सेशंस हुए हैं. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वन 8 or 9 सेशंस इन द होल सीरीज. और टेस्ट मैच का सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है हर एक दूसरे फॉर्मेट पे, इट गिव्स यू अ You're चांस playing टू two कम बैक. times. Yeah, इट गिव्स अ चांस absolutely. टू I कम think बैक. it's a very sore loser comment mentality there. And I think it shows, I think, the state of Indian cricket. If this is the kind of mentality they have, and then this whole idea that why should it only be in June? You have this whole idea of playing IPL and you want to prioritize IPL and you'll spend 3 months doing that. नहीं How do मतलब you आप नहीं, format? एक और चीज बोलिए कि मार्च में बोल रहे हैं, मार्च में कहाँ खेलेंगे? यू कांट प्ले इन इंडिया. You can play यू in कांट India. प्ले What do इन you want to इंडिया. play? ऑस्ट्रेलिया में इट इज विंटर्स, राइट? आई Australia मीन is just ऑलमोस्ट winter. विंटर्स. Well, it's winter is समर्स, लेकिन ending. समर का एंड हो जाता है. समर आया उनका, नहीं है अभी. हाँ, उनका सीजन खत्म हो जाता है समर खत्म बेसिकली, हो गया है. खत्म हो हाँ, जाता. समर खत्म हो गया राइट. है. विंटर्स आया नहीं है. एंड दिस राइट. इज रिवर्स इन इंग्लैंड. एंड यू वांट टू प्ले साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में वही होगा ना, Absolutely. I सदर्न mean, हेमिस्फीयर though, में. and I think it's a very, I think it's a sore loser, sore grapes, excuse था ये कि हार गए तो 3 मैच चाहिए. And I think I even heard Sunil Gavaskar and others also kind of या gave back और at him. और ये This is not और the ये statement देखा you would जाए like तो, to make. और ये देखा जाए तो ओवल की पिच वाज नॉट बैड. मतलब ऐसा क्या, मतलब इट बेसिकली हेल्प्ड एवरीवन. लायन ने It आके did. विकेट्स लिए हैं. Actually, it यू, was a very good, it was a very good wicket. अगर आप, वेरी गुड विकेट. आई मीन फर्स्ट दो दो दिन रन्स भी बने हैं, 400 रन भी बने हैं, सेंचुरी भी बनी है. आपने भी अच्छी बैटिंग की है, 300 रन आपने भी बनाए, ऑलमोस्ट 300 रन बनाए आपने Almost, Rahane फर्स्ट. almost quite a century in the सेंचुरी. first तो innings. Almost. तो आपको Shardul did a और क्या 50. मतलब, आप क्या चाहते हैं कि इंडिया में आके आए, इंडिया में टेस्ट मैचेस हो No, और you डेढ़ want, दिन दो I दिन mean, में they मैच खत्म? essentially is basically conveying कि भैया final next time India में करो. We'll make our spinning track right from ball one, and we'll put in Akshar Patel and Ravichandra Ashwin and Ravindra Jadeja and put a three spinner attack, and we'll वो wrap the उसी के game कारण 2 days. And I think that is the यार whole thing, which is यार unwrapped the whole problem for them. And I think Justin Langer ने comment मारा था, which I thought was a very spot on in the BBC commentary. It was coming कि उन्होंने बोला कि उन्होंने सीधा बोला, मतलब कि being direct guy, he said scores like 40s don't win you games, centuries win you games in the second innings game, and the highest score in the India's second innings was 49. You can't expect to win matches, forget tournaments, when you score less than 50 by the entire team, supposedly the top ranked star players. And I think that is clearly evident that India's batting is a problem. India राइट. is not realizing it. And for me, and I think I'm finding this also with Dravid. I mean, he is blaming his bowlers. Um, this is what he said. Dravid rules India's first day no-show with the ball. I mean, why are you giving too much importance to your day one? You had 4 more days to come back. You clearly did not play your second innings very well. And I mean, I think this was a good article where Manjarekar and Haden are talking India's batting is reliable. हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि
India's batting is no longer reliable. And I think, ये yeah, काफी टाइम हो गया एक्चुअली. काफी आई टाइम थिंक हो गया, and I numbers think numbers numbers are numbers stating don't it. lie. Numbers don't lie. I think yeah. बोलना चाहिए कि ये जो चार प्लेयर हम बात कर रहे हैं, पुजारा एंड कोहली एंड रोहित शर्मा हिमसेल्फ, they're there on the reputation. They're not there on the current performance. Yeah, And you're right. if India needs to make a move, they probably have to give some of the younger folks a chance who have been doing well in domestic circuit, who have done well in IPL. उनको chance दो, or they'll do what India did in Australia. The Gaba team was a young team. The Young team, Australia series absolutely. की young team थी वो. That was no, it did not have Bumrahs, it did not have Kohlis, it did not have any of the star players. It had Washington Sundars, it had Punts, it had the youngsters coming and playing in through. So I think India really needs to look at Dravid, Rohit Sharma's test team. One day and T20 can be separate anyway, and really look at who they want to give a little bit more chance, because I think Pujara and some of these other players, great, they have done well. I think it's time has come for India to relook at their squad. दिखना चाहिए उन्हें. हाँ, आई थिंक वही जो मैं जो बोल रहा था कि नंबर्स डोंट लाई. चार आप लास्ट 4-5 साल उठा लीजिए. आई मीन एवरीवन नोज कि कोहली वाजंट स्कोरिंग. और कोहली का एम्पलीफाई इसलिए हो गया था. ही वाज नॉट स्कोरिंग इन T20s, ही वाज नॉट स्कोरिंग इन He's not IPL, ही scoring वाज नॉट anywhere. स्कोरिंग एनीवेयर. मतलब यार 3-4 साल से आई नो उनका कैलिबर बहुत है, लेकिन आई डाउट दैट अगर कोहली शायद ऑस्ट्रेलिया में होते, आई डोंट थिंक सो ही वुड हैव बीन इन द टीम. आई मीन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम. फिर आप पुजारा I देख think लीजिए, फिर आप रोहित शर्मा देख लीजिए. रोहित शर्मा इंजरी प्रोन भी रहे हैं समटाइम्स. और जैसे मतलब स्टार्ट स्लिप मिलती है और ही गेट्स आउट. दैट्स नॉट गुड इनफ इन टेस्ट क्रिकेट. फिर आप केएल राहुल ले लीजिए. केएल राहुल, आई oh नो इज man, नॉट he देयर had इन द so टेस्ट many मैच, chances. एंड ही वुड हैव He प्लेड. he would ही have वुड हैव played. प्लेड इफ ही वाजंट इंजर्ड. Correct. और फिर रहाणे भी, आई नो रहाणे प्लेड वेल, लेकिन रहाणे को भी काफी मौके मिले थे व्हेन इवेंचुअली ही वाज मेड द बली का बकरा among Correct. the four batsmen. तो numbers don't lie. I think मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंडियन टीम को ड्रामेटिक चेंजेस करने चाहिए. आई थिंक लॉन्गर फॉर्मेट में, आई थिंक धीरे धीरे मैं बोलूंगा. They need to start including some youngsters. दे नीड टू स्टार्ट. आई थिंक आई वुडंट बी सरप्राइज्ड. थोड़े थोड़े जो प्लेयर्स हैं उनके हमने शायद शायद लास्ट मैचेस देखे हैं. आई एम नॉट सेइंग इट्स गोना बी विराट कोहली, लेकिन हो सकता है कि पुजारा. आई एम नॉट सेइंग रहाणे डिड वेल, लेकिन यू नेवर You नो. really think they'll want to make changes? I don't think this management BCCI doesn't give a damn about all this. They don't care about us. Ah, That's the thing. that's also another argument. I think BCCI ये जो IPL, आई थिंक IPL इज एन एलिफेंट इन द रूम यार. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि IPL इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर BCCI. आई नो इट्स अ कैश काउ, लेकिन समवेयर दे हैव टू मेक सम डिफरेंट प्लान्स, मे बी फॉर प्लेयर्स. आई थिंक जैसे ऑस्ट्रेलिया या फिर दूसरे कंट्रीज करती हैं कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट में, जैसे अब एशेज जब आया तो देयर सर्टेन प्लेयर्स ऑफ इंग्लैंड हु आर अ श्योर शॉट कि दे आर गोना टेक पार्ट इन द एशेज, दे कम बैक. और ये आज से नहीं, काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन ये इंडिया में होता नहीं है. क्योंकि अगर इंडिया में आपके टेस्ट लिए की प्रायोरिटी नहीं है ना. इंडिया में द ब्रॉडर प्रायोरिटीज IPL, T20, वर्ल्ड कप ODI फॉर्मेट, ODIs, एंड देन इट इज टेस्ट. अगर राइट. आपकी और लोएस्ट प्रायोरिटी में है, तो then you're not going to put investment into it, and then you're not going to focus on it. कैलेंडर में ही आप इतना डालोगे. आपने कैलेंडर भी ऐसा बनाया कि आधी से ज्यादा गेम्स इंडिया ने इंडिया में खेला या सब कॉन्टिनेंट में खेला. आप बांग्लादेश जा रहे हो, आप श्रीलंका जा रहे हो, आप इंडिया में मैचेस लगा रहे हो, लाइक इंग्लैंड कमिंग टू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कमिंग टू इंडिया. ऑल यू डू इन 2 years इज वन अवे टूर लाइक एन ऑस्ट्रेलिया, और वन अवे टूर लाइक एन इंग्लैंड. एंड देन यू विल कंप्लेन कि यार अब इंग्लैंड में क्यों खेल रहे हैं हम, कहीं और क्यों नहीं खेल सकते, जून में क्यों खेल रहे हैं. these are absolutely excuses. मतलब a top tier, a world class team will never make an excuse कि आप जून में खेलो, जुलाई में खेलो, मार्च में खेलो. will play everywhere and anywhere. And and Rohit especially Sharma's when comments are you
statement, Right. and it's proving what kind of team you're running and the kind of management you have with Dravid and the BCCI. I think it's a shambolic result off the field, on the field, and also the shambolic हम्म। attitude off the field. And I think नहीं, और मुझे वो मुझे समझ में नहीं आया कि आप देखो, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि सी ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि ठीक है इंडिया हार गई और बुरी तरह हारी, लेकिन लास्ट 2 साल में दे हैड सर्टेन अचीवमेंट्स, और उन्होंने इंग्लैंड में जाके 2-2 किया, वो भी क्वेश्चनेबल था। आई मीन वी स्पोक अबाउट दिस इन द लास्ट एपिसोड कि उन्होंने आईपीएल के लिए क्या, मतलब आई थिंक दे गिव अवे द सीरीज टू इंग्लैंड, हालांकि बाद में ड्रॉ हुआ, लेकिन दे स्टिल गिव अवे। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेले। तो ये मुझे समझ ही नहीं आया स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा क्यों दिया कि यार कि ये बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए, फिर ये मार्च में होना चाहिए, इंग्लैंड में क्यों नहीं होना चाहिए, एंड दे इंग्लैंड में डन ही वांट्स इट। ही बेसिकली सेइंग मुझे इंडिया में डाल दो, आईपीएल के बाद हम यहाँ पे खेल लेंगे और ये जीत जाएंगे। एंड आई थिंक इन अनटिल अनलेस इंडिया ये सबकॉन्टिनेंट पिचेस और ये जो इंडिया सेंट्रिक मैकेनिज्म बनाएगा, दे गोना गेट फाउंड वांटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, and even West Indies. And the moment West Indies slightly gets a nicer team, you'll not be नहीं, आई surprised if थिंक West Indies अगर also can सी put nice pitches आई and do थिंक it. But आई थिंक अरविंद एक और चीज है, मतलब अगर इफ यू जस्ट लुक एट इट कि इंसेंटिव ऑफ मेकिंग द पिचेस की आपको पॉइंट्स आएंगे। सो अगर इंडिया लेट्स सपोज दे मेक द पिचेस दैट दे यूज्ड टू मेक, लेट्स से ऑलमोस्ट अ डेकेड बैक जैसे पिचेस होती थी, आई एम नॉट सेइंग इंडिया वुडंट बी फेवरेट्स, बट दिल स्टिल रिमेन फेवरेट्स, लेकिन मैच तो कहीं पे इवन स्टीवंस हो सकता है, मतलब यू कैन गिव 30% nee, चांस, 40% चांस। my point, Saurav, is India is not going to change their pitch strategy. They're going to make the pitches राइट। what they have. The issue I'm saying is this is going to impact India long term. The moment you इट have इज। teams like South Africa and West Indies, थोड़ा सा भी उन लोगों ने अच्छा स्क्वाड बना लिया, and start to slightly put nicer pitches on their side. And if India tours and New Zealand, Australia, England, South Africa, West Indies, they're not gonna win or they're not gonna lose. It basically is India of 80s and 90s. जब आप घर में शेर हो और बाहर जाके बिल्ली बन रहे हो, it'll be like subcontinent tigers. You're not gonna win more. You will probably win one test here and there, and then you're not gonna give chances to youngsters who are hungry to prove enough in other other pitches and all. Uh, आई थिंक एक स्केरी चीज इंडियन क्रिकेट के लिए ये है कि लास्ट जो भी 7-8 साल में जो भी बाहर जो अच्छे परफॉर्मेंसेज आए हैं, इट्स प्राइमरली ड्यू टू देयर लोअर ऑर्डर, दैट्स नंबर वन दैट वी स्पोक अबाउट, एंड देयर बोलर्स, the bowlers. बुमराह, शामी, ईशांत शर्मा जो अभी टीम में नहीं है। तो शार्दुल ठाकुर ने जैसी परफॉर्मेंस दी थी ऑस्ट्रेलिया में, या इंग्लैंड में भी उन्होंने जब लास्ट टाइम आए तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन अगर आप देखेंगे Your अब इंडियन Pant क्रॉप। and Jadeja, you have Ashwin. These are your players who are हाँ, saving you. And लेकिन अब Dravid blasting the players. Day one में bowler नहीं अच्छे करा. We gave away in day one. Absolutely, I think Dravid, Rohit Sharma. या तो I अभी think this is not एक working. एक स्केरी प्रोपोजिशन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और टेस्ट मैचेस में ये है कि आपके जो बॉलर्स हैं, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आई थिंक एट एट प्लेयर्स इन इंडिया राइट नाउ आर मिड About थर्टीज, 33. Yeah, राइट, yeah, yeah. 33-34। और अगर आप शामी देखेंगे, बुमराह आई डोंट नो इफ ही इज गोना मेक अ I कमबैक don't टू think द he's gonna टेस्ट come back to मैचेस। test in at the same level. We don't know. अश्विन देख रहे हैं, अश्विन की एज 36 है। रविंद्र जडेजा ऑल्सो इज इन इज लेट अर्ली 30s। तो आपके पास India is एक, gonna have an upheaval in the next year or two, and I think I will not be surprised if India doesn't qualify for the next World Test Championship finals. आई डोंट थिंक सो दे वुड बी फेवरेट्स फॉर श्योर। अगर आप बोलेंगे कि I would say Australia, England probably are going to be a little bit more favorites. Baseball abhi aaya hai Australia, England. We'll see how they do it. I would put them probably a little bit ahead of India in terms of World Test Championship. I think India's test prospects doesn't look good. और दे डोंट बीसीसीआई को दे देखना डोंट चाहिए if they don't put priority to test. I think India will not take this seriously, and I think इसका सीधा इम्पैक्ट इसके ओडीआईज और टी20 में आएगा बिकॉज आई डोंट सी विद द काइंड ऑफ सेटअप दे हैव दे गोना विन एनी वर्ल्ड टूर्नामेंट विद व्हाट दे हैव टुडे। मेंटालिटी आई नहीं है थिंक वो। दो चीजें हैं, एक जैसे आपने बताया, मैं शायद मैं रिपीट करूंगा, आई थिंक टेस्ट मैचेस में जैसे इंडियन पिचेस हैं, 2 दिन 3 दिन में मैचेस खत्म हो जाए, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द फास्ट बॉलर। आपके फास्ट बॉलर 1-2 ओवर करते हैं,
वो भी फर्स्ट इनिंग में या फिर करते भी नहीं है। आई हैव सीन सर्टेन टेस्ट मैचेस दे आर टोटली इररिलेवेंट। तो फिर वो बाहर जाके वो बॉलिंग करते हैं एंड दे हैव डन रियली वेल। लेकिन फिर आईपीएल है, आईपीएल में आप सिर्फ 4-4 ओवर डालते हैं। अब नेक्स्ट क्रॉप ऑफ फास्ट बॉलर्स का इंसेंटिव है आईपीएल, तो आप उनको इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हो टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। आई मीन, डू यू कैन यू रिक आई मीन प्रसिद्ध कृष्णा, आई मीन एक टाइम था, आई थिंक 2 सीजन पहले जब आईपीएल हुआ था, वी आई मीन एवरी यू नो ex Indian players and media houses, they were making claim that India has a tremendous crop of fast bowlers. And you just think of it now, there's none. उमरान मलिक को आपने पता नहीं क्या किया है, प्रसिद्ध कृष्णा है, सारे इंजरी प्रोन है और सारे इंजर्ड प्रोन है। आई मीन पता नहीं ये क्या हो रहा है। सो सडनली आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो एक क्या बड़े बड़ी कॉल दैट बेंच स्ट्रेंथ, राइट? बेंच स्ट्रेंथ एटलीस्ट इन टेस्ट मैचेस लुक्स Uh, एम्प्टी ऑल it's ऑफ अ सडन। empty. I think India has a darker test prospects. Anyway, so I think we'll end it there. I think it's a shocker statements from Dravid and Rohit Sharma. Embarrassing to say the least, and pathetic. And I think Australia has given them a right response. Cummins and Australia has shown them how it's to be played and everything. I'll end it with this. I thought was apparently Shubman Gill makes this tweet, which is right now in the Oh, news. he's gonna get punished for it. He shows this and he says to Yeah, what do you call this? Zoom, this thing, and yeah, then Zoom, yeah, 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 and then this face palming whatever. emoji. Hmm. You're attacking Empire. Basically, you're saying Empire is idiot. आपने यही कह दिया in the tweet. What are you trying to say that no, I don't understand this team of India. I think he's gonna get fined He's probably. gonna get fined. He's gonna get So fined. this is an absolutely stupid. So it's like आपने match हारा and then you can see the series of stupidity coming from the team. Embarrassing statements, bad, weird, bizarre statements coming out in the cross conference, and then you doing this, off the field Twitter shenanigans. But yeah, so I think we'll end there with that. I think India is gonna go back. रोते रोते जा रहे हैं. And yeah, second straight successive loss, 12 years wait continues for IPL trophy. तो वो इंग्लैंड फुटबॉल जैसा हाल हो गया है जहाँ पे वो भी नहीं जीतता और surprisingly the English Premier League is the greatest league in the world. So it's actually becoming Yeah. that mirror image. I thought this was I will end it with this. आज I think World Cup के venues आ रहे हैं. So India is playing at these venues. If you look at the this thing, you got Chennai, Australia के साथ. I thought it was traditionally going to be this thing. They're playing Afghanistan on Delhi. They're playing Pakistan and Ahmedabad. I think this is during Diwali, sort of this thing. They're Oh playing man. Pune, Hmm. Bangladesh, and then they're playing Dharamshala. They're playing England in Lucknow. Okay, Lucknow. It's like okay, and then they have got Mumbai, Kolkata, and Bengaluru. You know what's missing? Hyderabad. Hyderabad, Kolkata. Acha, Kolkata is there. Hyderabad Kolkata is is there. there. Hyderabad. If you look at your top Hmm. metro cities, you added Pune. Fair enough. It's in top eight. Ahmedabad top eight. You added Lucknow and Dharamshala. You could not give New Zealand or England to Hyderabad. Strange. Absolutely, absolute joke of a this thing. Um, and then you had other this thing where Pakistan is gonna play in Hyderabad. Okay. Um, Australia, I think, has I believe Bengaluru ka hai, Afghanistan, Chennai, and so all of that. I don't know why Dharamshala is getting so much this thing. I get it, it's a beautiful stadium. Honestly, you gotta give it a stadium which have high capacity. Like Hyderabad has a 60,000 capacity. Yeah, I think it's a bad move of India not getting India game in Hyderabad. मैं आई Yeah, थिंक धर्मशाला लखनऊ के बीच में they could have just they could have given एक one game to हैदराबाद Hyderabad. गेम to Hyderabad, yeah. I thought, and especially like India, England.
You're playing the world champions in Lucknow. No offense to Lucknow, but it's not a top 6 urban city. It's not. And I don't remember Lucknow Stadium to be that magnificent of history and all of that. Right. So that I thought I it was think interesting. I think India Pakistan का जो अहमदाबाद में game है, I know, मतलब I don't know if it is 100% sealed. I know the itinerary has come. I think Asia Cup का भी कुछ I think confirmation ये आया है. हो रहा है. This is a draft schedule, but and it looks like England is going to open with New Zealand. I think that's going to be a killer one. Oh, okay. This will be a nice one. I don't know where they're opening. कहाँ हो रहा है? But yeah, it does look like final is in Ahmedabad. Why am I not surprised? Semi-finals are in November 15th and 16th. And so I think it's going to be an interesting tournament. Yeah, I think it's going to be a good one. I think India Pakistan. My money is on Pakistan. I know people may not like it. I think Pakistan is one of the favorites. I actually think that we'll do World Cup some other time, but Yeah. based on this thing of India, we'll see. I think if India doesn't win the World Cup this year, questions are going to arise out of this management and the BCCI. With the Right. way I they think have lost everything this year. Yeah. I think मैंने I कभी think the start. World Cup is a final camel, वो बोलते हैं ना कि final straw on the camel's back. I think all the hopes of India is on World Cup. I think if they don't deliver it, this setup is in trouble. Dravid. No, I think you can take it. I mean, Yeah, irrespective of what happens, I think irrespective of whatever happens, I think you possibly would be seeing the last of Rohit Sharma and few other players. I won't say Kohli, लेकिन few players, irrespective India जीते नहीं जीते, I think थोड़े players का ये तो last World Cup है और last हो सकता है series भी हो World Cup as a series. लेकिन हाँ अगर I think India has a good. मैंने अभी बोला इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान is a favorite, लेकिन India has a decent chance. I think मैंने आपको जैसा हमने I think we discussed it. I think 50 over World Cup kind of fits well, the way they play, their brand of cricket. And I think India का सबसे बड़ा edge over the other teams is their spinners. I don't think so they're at any team home. have. Which is what I'm They're saying. at If home. you're at home and you Yeah. don't win the World Cup with the squad you have, you're in trouble. As Right. the set. I think The they Rohit hope Sharma, Bumrah. Rahul Dravid, Yeah. this BCCI management of Jesh and the that body, the Pragyan Oja and the whole the setup today, that's in trouble if they don't win the World Cup. Right. I think Bumrah आएंगे. I think India has a decent chance. लेकिन हाँ अगर आपने जैसा सही बोला, I think अगर India does not come, I think finals भी नहीं बोलूंगा लेकिन नहीं जीती तो क्योंकि 12 साल से I think 12 साल Imagine से नहीं जीती तो it would be almost what yeah, next World Cup is so 2028. You're looking at 17-year wait for a World Cup, man. And For a team considering, which I prides think itself. I think considering एक और चीज I think we have to consider कि अगर आप देखेंगे, I mean I'm an ardent South African cricket fan. I think last 7-8 सालों से इतनी सारी टीमें नहीं रही हैं जो कॉम्पिटिटिव है. I think ऑस्ट्रेलिया रही है, 4-5 इंग्लैंड रही रही है, पाकिस्तान I know they might be coming up well now, लेकिन आप देखेंगे पाकिस्तान in the last 6-7 years they were nothing. साउथ अफ्रीका हैज रिसीडेड. तो सिर्फ 2-3 टीमें रह गई हैं. तो आई मीन अगर आप उस पे 2-3 भी टीम नहीं आ पा रहे हो, I mean, then anything below semi-finals is a disaster. Like not making to disaster. semi-finals is a disaster. Not making to Right. finals is a poor thing considering your home favorites. Right. Not winning is Right. disappointing. I think that's Right. where it is. Anyway, we World Cup ka time hai, but the venues have where looks like it's been sealed, so it looks interesting. But that's all we have for today. Looking forward for Ashes. Ashes, yeah, That it's is going going to to be be the a next cracker. one videos for us. It's going to be a cracker. Cracker. First test starts this Friday at Birmingham. Baseball versus the World Test Champions. Right. What a way! What a way for them to start the new cycle of tests. So we'll end Not it too here. far away. Yeah, not too far away. 4 days. I think they got the perfect setup. 4 days. Thank you. Please like and share the video. Please subscribe. And we will talk again for the Ashes reviews. Bye. Yep. Bye-bye.